Welcome back. Now, just days before Punjab votes in the final phase of the Lok Sabha elections, the Aam Aadmi Party has found itself in yet another controversy. The National Commission for Women has issued a notice to the Punjab DGP ordering him to act against Minister Balka Singh over an alleged video of him sexually forcing a young girl to undress and also masturbating in front of her. The Women's Commission has termed the alleged incident as outrageous and said that strict action must be taken against the said minister. The NCAA action comes after the BJP released this alleged video and has asked the Punjab Chief Minister, Bhagwant Mann, to sack Balka Singh from his position. Other opposition parties like the Akali Dal and the Congress, which is an ally of the Aam Aadmi Party at the national level, too have slammed the party over the alleged incident. आम आदमी पार्टी का चरित्र और गिरता हुआ किरदार आज फिर से एक घिनौना चेहरा सामने आया जब आम आदमी पार्टी के पंजाब के एक मिनिस्टर बलकार सिंह जो एक 21 साल की बच्ची को नौकरी देने के लालच में देकर उसके साथ किस तरह से वीडियो में शोषण किया जा रहा है, ऐसी गंदी वीडियो की कोई उसे शेयर भी ना कर पाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पंजाब के मंत्री हों, इनके एमएलए हों, आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है ये गंद से भरी हुई है, गंदे लोग हैं और कितने गंदे कारनामे। ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी बनाने वाली, एक पॉर्न मूवी बनाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। I have no comments and not in my knowledge. So we are being joined by Jaybant Singh, the chief spokesperson of the BJP in Punjab, and also Parvinder Singh Sethi, a political analyst who follows the Aam Aadmi Party very closely. Jaybant Singh, coming to you first. We heard what Balka Singh has to say in his defense. He says he has never seen or heard of this video. Does this convince the BJP? Thank you, Ritanshu. No, it does not convince the BJP at all. And I just want to say this much, that it's very unfortunate that today I have to join in a debate of this nature in your channel, because Punjab has always been known, Punjabi Sikhs have been known to always protect and respect women. It is our tradition which has been going on for centuries on end. And now with this party coming in, there has been a series of sexual misdemeanors which have shamed us so thoroughly that we cannot even raise our head anywhere. And I just now saw Manjinder Sirsa ji speaking. I can give you certain data on this thing, that earlier Minister Lalchand Kataruchak was caught in a similar sort of a sexual misdemeanor. Before that, Jagdeep Goldie Kamboj, his father Surinder Singh, was arrested for extortion in a flesh trade. And there are so many other cases of corruption and misappropriation. Vijay Sigla, Jaswant Singh Gajjan Majra, Rajinder Kaur Chinna, and now we have Balkar Singh. I think all this is happening because of the inability of the Chief Minister to keep a check on his MLAs and his ministers, who think that now that they have got a power, they can get away with everything. But I would very earnestly request that nothing of this sort should be happening, because we Punjabis, we do not want to face this shame. We can face the fact that there is a lack of employment, there is lack of law and order, there is sand mining, there is corruption. But this is something that we find it very difficult to digest and to face. Indeed. Stay on with us, Jaybant Singh. Parvinder Singh is with us as well. Parvinder Singh, with an allegation of such serious nature, is it not at least expected from the Chief Minister to come up with a statement at the bare minimum, if not order a full-scale investigation? Why does it need the NCW to step in? देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि किसी संगठन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विधायक भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं। अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो ये जांच का विषय है और इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और अगर वो आरोपी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी या किसी और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महिला के सम्मान की बात है कि वो महिला कहीं की भी हो सकती है, लेकिन दुख तब होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी, जब महिलाओं के साथ रेप के अटेम्प्ट होते हैं और उनकी एफआईआर होने पे, मैं महिला खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं,
कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, उन्हें जंतर मंतर पर बैठा पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ उनकी एफआईआर होती परविंदर है सिंह और सेठी जी, उसके ये वही आरोपी के वापस वॉट लड़के को अबाउटरी पर आ गए। टिकट टिकट दी जाती है और उसको परविंदर अपना सिंह जी, प्रचारक वापस बनाया वॉट जाता है। अबाउटरी पर तो आ गए। अगर ये, ट्रांसलेट या फिर हम ये मान ले कि आम आदमी पार्टी और दूसरे पार्टी में कोई फर्क नहीं है, जो बड़े बड़े डंके के चोट पे जाकर केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम आम आदमियों की पार्टी है, आम आदमी से बनी पार्टी है। ये दूसरी, ये जब से केजरीवाल जी बेल से छूटे, आप एक बार हेड सुर्खियां देखिए जो आम आदमी पार्टी से निकल रही है। डीसीडब्ल्यू चीफ, फॉर्मर डीसीडब्ल्यू चीफ जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी है, उनकी पिटाई हो जाती है चीफ मिनिस्टर के घर पे। चीफ मिनिस्टर को कोई पता होता है नहीं, कुछ कैसा हो जाता है किसी को पता नहीं है। अब ये ऐसी घटना आई है पंजाब से। ऐसे घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी किस मॉरल ग्राउंड से कह सकती है कि नहीं, दूसरे पार्टी को भी देखिए, हमारे तरफ फोकस मत कीजिए? अगर आपने खुद ही बोला ना कि जांच की बात है, तो जांच क्यों नहीं ऑर्डर किया सिंह साहब ने? नहीं, देखिए देखिए एनसीडब्ल्यू ने उनको तलब किया और उनकी अगर वो पुलिस समझेगी उनकी एफआईआर दर्ज होगी, जो आरोपी महिला है उनको सामने आना पड़ेगा। जिस प्रकार आप स्वाति मालीवाल जी की बात कर रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल जी के ऊपर से इमीडिएटली संजय सिंह जी ने अपना रिएक्शन दिया था। उसके बाद जांच करी, वीडियो जब सामने आई तो उसके तथ्य कुछ और नजर आए। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है, उसकी जांच चल रही है। अगर वैभव कुमार आरोपी पाए जाएंगे, उनके ऊपर जो कानून में बनती सजा उनको मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन जो राजनीति से प्रेरित बात है, ये भी एक जांच का विषय है। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि राजनीति में कोई अपना स्तर इतना ना गिरा ले कि राजनीतिक कारणों से इस तरह की घटनाएं हों। और लेकिन मैं ये समझता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं कि जो महिला है, उसका हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए। उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए और उनको राजनीति में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। Jaiban Singh, how would you respond to this, to the counter coming in from sections from the Aam Aadmi Party, including Mr. Sethi as well, that it is important at this point to recognize the wishes and the privacy of the woman in question here, and not to make her a pawn in a political game. And while the NCW in this case and in the case of Swati Maliwal has been so hyperactive and so forward with its actions here, it was curiously missing when it came to the case of Brij Bhushan. I don't believe the BJP MP, Mr. Brij Bhushan Singh, was ever summoned by the NCW during this entire controversy. Exactly. I am even more agitated after hearing the statement of my very good friend from the Aam Aadmi Party, Sethi Saab. Look, nobody is trying to play any politics as far as this case is concerned. It's a black and white case. The National Commission for Women has issued a notice. The first thing that they should have done was they should have asked the minister to resign. If he was proved to be in the right, they could have reinstated him. But since they did not do anything of this sort, even in the case of Lalchand Kataruchak and in the case of Surinder Singh Kamboj, the other ministers now, they feel that they can get away with everything. And this is why this situation has come about in Punjab, where the women have started feeling unsafe and insecure, something which has never happened in Punjab for the last many centuries. I do not want to politicize this thing. Whatever is happening, whatever Brij Bhushan has done was wrong. He has been castigated by the party, and the cases are on. But we cannot try to bring two cases together. If there is one wrong, you cannot point out. You cannot cover it by talking about another wrong. Sir. So I would be very grateful if I Chief agree. Minister, I agree with you, sir, at this point that whataboutery is the last thing whataboutery is the last thing women of our country need and deserve at this point, because if we go about as to what about in the other case, what did that person do, we will never achieve justice for anyone. This is a very serious case, and my only request is, and my only hope is, that all the parties in this case, especially the Aam Aadmi Party, which is ruling in Punjab, deals it with the gravity it deserves and let it not become a political fodder for the last phase of elections which is happening in Punjab. Thank you so much, Jaiban Singh ji and Parvinder Singh Sethi, for joining us with your views. We will be discussing this at length in prime time later on tonight. But for now, it's time for a short break. On the other hand, we have some more news coming in from the Aam Aadmi Party Supremo.